Morning, student. Today's the second class of my in class 8 geography. Yesterday we were learned about the resources, and the first topic I was dealing about the resources definition and the meanings. Tomorrow I will study. I am going to learn or teach you about the importance of resources. That is the second topics of the first lesson. Okay, what are the importance of the resources? Why resources are essential for us? What are the role of the resources in the human life? It is the important. These are the main questions from these topics, and you know about this. The resources is the essential part of our life. Importance of resources. Okay, it is the second topics of your first lesson, resources. All the resources are the more valuable and the useful of the human beings, as we know that the resources which are available in our environment and satisfy our needs is called resources. Everything which are found in our environment, वैसा सभी वस्तु या पर्यावरण में मिलने वाली environment को मिलने वाली तमाम चीजें जो हमारे लिए उपयोगी है, जो हमारे जीवन को बेहतरीन बनाता है, जो हमारे लाइफ को एक बेटर फॉर्म देता है, वो सभी वस्तुएं को हम क्या बोलते हैं? रिसोर्सेस बोलते हैं। वो क्या इंपॉर्टेंस है? व्हाट आर द इंपॉर्टेंस? कैसे हमारे जीवन के लिए आवश्यक है? इसमें देखेंगे द फर्स्ट, ऑल द रिसोर्सेस आर द मोर वैल्यूएबल एंड द यूजफुल ऑफ द ह्यूमन फॉलोइंग स्पेस। तो फर्स्ट, दीज आर द इकोनॉमिकली प्रीशियस। इकोनॉमिकली प्रीशियस होता है, कोई भी रिसोर्सेस हो इकोनॉमिकली वैल्यूएबल होता है और उसके इंपॉर्टेंस हमारे लाइफ में इकोनॉमिकली फॉर्म होता है, and important for the development of nation, person and society. Resources की सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस ये है कि ये हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमारे नेशन के डेवलपमेंट के लिए, हमारे पर्सन के डेवलपमेंट के लिए एंड द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, दीज आर द इम्पोर्टेंट। द फर्स्ट सेकेंड टॉपिक्स है, सेकेंड जो इम्पोर्टेंस ऑफ दी सोसाइटीज है वह है these are based used for export and import. These are used for export and import, by which we'll earn foreign exchange, foreign money. इसके इकोनॉमिकली वैल्यू में सेकेंड वैल्यू ये है, सेकेंड इम्पोर्टेंस ये है कि रिसोर्सेज से हम एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करते हैं, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो देन वी गेट ए लॉट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज एंड लॉट ऑफ द फॉरेन मनी, बाय व्हिच आवर नेशंस और आवर कंट्री डेवलप। द सेकेंड टॉपिक, द थर्ड इम्पोर्टेंस ऑफ दीज आर, थर्ड इम्पोर्टेंस, our nation, our industries, the raw material of our industries, the raw materials are provided by the resources in the industries. Fourth importance of these, that
it provides us happiness and pleasure, which is the aesthetic importance of resources. Okay, the four importance of the resources, four importance for our life, the importance of the resources. So geographer told it, generally geographer says that the resources are the essential part of the human beings. Without the resources, human beings cannot be civilized, human being cannot be developed, human being cannot exist on the earth. Such as without the water, human cannot be alive. Without the air, human cannot be alive. Without the natural vegetation, our environment cannot be formed. So we can say that the resources are the essential and the important part of our life and the environment. Okay, thank you. It is the second topics of your lesson. ये हमारा दूसरा टॉपिक था जो हमने ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन बताया। उसमें हमने कल के पहले वाले क्लास में आपको बताया था कि ज्योग्राफी में ये फर्स्ट लेसन रिसोर्सेस है, जिसमें हमने टॉपिक्स लिया था। आपने अगर कल नोट्स देखा होगा, कल आपने नोट्स बनाया होगा या कल आपने वीडियो देखा होगा, तो इसमें हमने दिखाया था कि आपको बताया था कि हम इसको टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाएंगे। हमने आपको ये सेकेंड टॉपिक पढ़ाया एंड नाउ we are going to study about the third topics of your lesson. Third topics is the types of resources. Types of resources. Resources can be classified into three parts. Okay, resources can be classified into three parts. ये थर्ड टॉपिक्स है, टाइप्स ऑफ द रिसोर्सेज। इसको हमने तीन भाग में बांटा। सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज, द फर्स्ट नेचुरल रिसोर्सेज, एंड सेकेंड मैन मेड रिसोर्सेज, and third human resources. Okay, there are three categories of the resources. और ये तीन कौन है? नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज. ह्यूमन इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, which are also the types of the natural resources. But your books classify or divided to the resources into the three parts: natural resources, man-made resources, human resources. अब जानेंगे what is natural resources. The resources, आप नोटबुक लेके बैठ जाएं and write down to this from the video. The resources which are naturally formed is called natural resources. सिंपल हम कह सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का जनरली सिंपल डिफिनेशन देंगे तो बोलेंगे वो ऐसी सभी रिसोर्सेज जो नेचुरल फॉर्म में हम ऑब्टेन करते हैं, गेन करते हैं, या जिसका फॉर्मेशन थ्रू द नेचर होता है, उसको हम बोलेंगे नेचुरल रिसोर्सेज. ओके, अब नाउ एग्जांपल टू दिस. एग्जांपल में वाटर इज नेचुरली फॉर्म्ड बाय ऑन द अर्थ. सेकंड, वाटर, सॉइल, minerals, natural vegetation, etc. Okay, these are the example of the natural resources. Second, man-made resources. Man-made resources
यानी the resources which are formed by human being for their needs, okay? ऐसे सभी रिसोर्सेज जिसका मनुष्य ने खुद डेवलप किया है, ह्यूमन बीइंग ने उसको डेवलप किया फॉर देयर पर्पस, फॉर देयर वर्क, फॉर देयर यूजेज, फॉर देयर नीड्स, फॉर देयर डिजायर. दीज आर द कॉल्ड मैन-मेड रिसोर्सेज. सच एज एग्जांपल हम यहाँ दे रहे हैं इसका, ह्यूमन मेड का है रोड्स. These are the developed. These are not the natural. These are the developed by the human being for the interest or the requirement of their needs. Roads, railways, hospital, market, etc. Okay, and third, human resources. You know about this. Human is also a natural resources. Human is the resources which developed as a skillful and laborious forms. A human which are the developed in the skill formed or the laborious, these are the called human resources. Human resources is the best resources. Natural resources, man-made resources, and human resources. Human resources is the best resources. And now we will study about one by one with the example and the definition. I learn about this. हमने एक्सप्लेन किया आपको तीनों रिसोर्सेज का डेफिनेशन और उसका हमने आपको एग्जांपल भी दिया. अब हम एक एक करके हम इसका टाइप्स भी बताएंगे. सबसे पहले हम देखेंगे नेचुरल रिसोर्सेज के टाइप्स. ओके, नाउ द टॉपिक्स नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज को देखेंगे. Natural types of natural resources. Okay, there are many ways on which we can classify to the natural resources. Okay, आप जब भी इसको आपको ऑनलाइन क्लास करें तो वीडियो देखिए और वीडियो के साथ साथ आप अपने बुक को और एक पेन पेपर और रख करके ही देखिए ताकि आपको अपने नोट्स बनाने में बहुत आसान हो. There are the many ways on which we can classify to the natural resources. What are the ways? The first, on the basis of origin. Okay, on the basis of origin. Second, on the basis of availability. Third, on the basis of renewability. And fourth, on the basis of status of resources development. Okay, resources development. What are the condition of the resources? That is known as on the basis of the origin. There are the two types of the resources according to the basis of origin. The first is
First is biotic resources. Okay. And second is abiotic resources. Okay. On the basis of origin, there are two types of the resources: biotic resources and abiotic resources. Okay. इसको हम साफ करते हैं, तब इसको हम डिटेल से देखेंगे। आप अपने नोट्स में आप एक लाइन खींचिए, इधर लिखिए biotic resources and abiotic resources. Okay. All the living things which are available in our environment, environment is called living biotic resources, such as human flora and fauna. Second, all the non-living things which satisfy our needs is called abiotic resources. Okay. एग्जाम्पल ले लेंगे इसका, वाटर, सनलाइट, मिनरल्स, etc. Okay. Now the some questions of these. Okay. Now some questions for the homework. Okay. Write down the homework of these topics and the questions are homeworks. जो होमवर्क वीडियो में दिए जा रहे हैं उसको आप होमवर्क क्वेश्चन लीजिए और क्वेश्चन करके उसको बेसिक रूप से आप क्या करेंगे कि उसको आंसर तैयार करेंगे और वही आंसर आपका असेसमेंट भी होगा। ओके। जब स्कूल की क्लासेस स्टार्ट होगी तब वो स्टेटमेंट आपके चेक किए जाएंगे। थैंक यू। क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन है क्लासिफाई टू द रिसोर्सेस। सेकेंड क्वेश्चन है how resources are important. Resources are important for the human being. And last है, next question है classify to the natural resources on the basis of origin. Okay. Now we will study about the next classification in the next video and the next classes. Have a nice day. Okay. Thank you.